अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू स्टडी ग्लो अप। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लेसन्स बहुत क्लियर होते हैं और स्टूडेंट्स जल्दी समझ लेते हैं, जबकि दूसरे लेसन्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और नेक्स्ट डे सब कुछ भूल जाते हैं। एक इफ़ेक्टिव लेसन का सीक्रेट है अच्छा लेसन प्लानिंग और स्पेशली क्लियर एस एल ओज यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे एस.एल.ओज आपके लेसन को स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड और एग्ज़ाम फ्रेंडली बनाते हैं। ये टॉपिक फ्यूचर टीचर्स और जो पेडागोजी के एग्ज़ाम्स दे रही हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि JST STS एग्ज़ाम्स में अक्सर लेसन प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। टीचर्स को SLOs चाहिए ताकि वो एग्जैक्टली जानें कि स्टूडेंट्स को क्या सीखना है, और प्रॉपर प्लानिंग से ही क्लासरूम की लर्निंग और स्टूडेंट्स की सक्सेस इम्प्रूव होती है। अगर टीचर SLOs प्लान ही ना करता है तो लेसन अनक्लियर, बोरिंग और इनइफेक्टिव हो सकता है। 1. व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग? लेसन प्लानिंग टीचर का एक रोड मैप होता है। ये बताता है कि टीचर को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे चेक करें कि स्टूडेंट्स ने सीखा है या नहीं। विदाउट प्लानिंग टीचर कंफ्यूज हो सकता है और डे जो है वो अनप्रोडक्टिव हो सकता है। 2. What are SLOs? Student Learning Outcomes. ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है जो बताती है कि स्टूडेंट्स लेसन के बाद क्या जानेंगे या फिर क्या सीखेंगे। SLOs क्लियर, मेजरेबल एंड अचीवेबल होते हैं। जो ये लेसन का गोल है। फॉर एग्जांपल लेसन है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अब इसमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऐड 2 डिजिट नंबर्स करेक्टली। अब आप ये चीज़ नोटिस करो कि स्पेसिफिक यानी ऐड 2 डिजिट नंबर्स, और मेजरेबल क्या होगा कि टीचर आंसर्स चेक कर सकता है। अचीवेबल यानी स्टूडेंट्स क्लास में इजीली कर सकते हैं। 3. Steps to write effective SLOs. 1. Identify lesson topic. For example, parts of plants. 2. Decide what students should learn. For example, students should name plant parts और उनके functions explain कर सकते हैं। 3. Make it specific and measurable, यानी इस लेसन के एंड तक स्टूडेंट्स को 5 प्लांट्स के जो पार्ट हैं उनका नाम भी आएगा और वो उनके फंक्शंस को भी डिस्क्राइब कर सकेंगे। 4. Use action words. हमेशा वर्ड्स लाइक आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट, सोल्व, डिस्क्राइब, कंपेयर यूज़ करें। अवॉइड वेज वर्ड्स लाइक अंडरस्टैंड, लर्न, नो। लेसन प्लानिंग एंड SLOs को हम एक रियल क्लासरूम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो लेसन है वो है वाटर साइकिल एंड SLOs। By the end of the lesson, students will explain the stages of water and simple diagram draw कर सकेंगे और उसकी जो स्टेजेस हैं वो शो कर सकेंगे। अब टीचर क्या प्लान करेगा? शॉर्ट स्टोरी अबाउट रेन से स्टार्ट करेगा, डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल शो करेगा, स्टूडेंट्स से स्टेजेस ऑरली पूछेगा, लास्ट स्टूडेंट्स ड्रॉ एंड लेबल वाटर साइकिल। यहाँ SLOs टीचर को हेल्प करते हैं फोकस्ड रहने में। सेकंड, पढ़ना क्या है ये पता करने में। थर्ड, ये चेक करने में कि स्टूडेंट्स ने सीखा या नहीं। Here is quick revision. लेसन प्लानिंग यानी रोड मैप फॉर टीचर कि वो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, हर एक चीज़। सेकंड, SLOs यानी स्टूडेंट्स को क्या पता होना चाहिए
और क्या करना चाहिए, ये डिसाइड करते हैं SLOs। एंड गुड SLOs जो होते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अचीवेबल। देन यूज गुड एक्शन वर्ब्स जैसे कि आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट। SLOs help effective teaching or exam preparation. Exam preparation section MCQs. So the first MCQ is SLO stands for A. Student learning objectives, B. Student learning outcomes, C. Student learning options, D. Student lesson order. Correct answer is B. Student learning outcomes. 2. Effective SLOs should be A. Vague and journal, B. Specific and measurable, C. Impossible to achieve, D. Only for teachers. Correct answer is B. Specific and measurable. 3. Which of the following is good SLOs? A. Student will learn about plants. B. Students will identify 5 parts of plants. C. Students will know everything about plants. D. Students will understand plants. Correct answer is B. 4. Action verbs in SLOs include A. Learn and know. B. Understand, memorize. C. Identify, explain, demonstrate. D. Think and believe. Correct answer is C. 5. Lesson planning helps teacher A. Stay focused, B. Teach randomly, C. Escape important topics, D. Avoid exams. Correct answer is A. 6. A lesson plan without SLOs may be A. Clear and measurable, B. Confusing and unproductive, C. Focused and easy, D. Exam ready. Correct answer is B. 7. Examples of measurable SLOs. A. Student will know addition. B. Student will solve 5 addition problems correctly. C. Students will understand addition. D. Student will learn math. Correct answer is B. 8. SLOs are part of A. Classroom discipline, B. Lesson planning, C. Homework only, D. School rules. B is correct answer. 9. Which SLO is best for science lesson? A. Students will read the chapter. B. Students will name 5 plants or describe one feature of each. C. Students will learn planets. D. Students will understand solar system. Correct answer is B. 10. Lesson planning with SLOs helps A. Improving teaching and learning. B. Confusing students. C. Skip syllabus. D. Reduce classroom activities. Correct answer is A. Improve teaching and learning. Here are practice questions for you. आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले कि कौन लेक्चर्स को एंड तक देखता है। फर्स्ट question is, what is a student learning outcomes? 2. Why are SLOs important in lesson planning? 3. Explain the steps to write an effective SLOs. 4. Give an example of measurable SLOs for a math lesson. 5. How do SLOs help teachers in JST or STS exams?
हमेशा याद रखिए, अगर टीचर विदाउट अ प्लान इज़ लाइक अ ट्रैवलर विदाउट अ मैप। SLOs आपके लेसन को डायरेक्शन, फोकस और क्लियरिटी देते हैं। अगर आप SLOs को इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हो तो आप बेटर टीच कर पाओगे और पेडागोजी एग्ज़ाम्स में भी हायर मार्क्स लाओगे। अगर आपको टेस्ट में टॉप करना है तो आप लेक्चर्स को रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स लिखो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर दो, क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व करो, SLOs को प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंस रहो। अगर आप JST और STS पेडागोजी में फुल मार्क्स लेना चाहते हो तो अभी स्टडी ग्लो अप को सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को लाइक करें और कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आपने अभी तक ये दोनों टॉपिक्स नहीं समझे हैं, वर्क लर्निंग स्टाइल्स और कॉग्निटिव फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस, तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड स्टडी ग्लो अप पर लेक्चर्स दिए गए हैं। मेक श्योर कि आप वो ज़रूर देखो और अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। खुदा हाफिज़।